So, one good afternoon, बच्चों. Good afternoon, students. Right? Good afternoon, sir. Good afternoon. So, under Good Mission afternoon, Fateh, sir. under Sir. Mission Fateh, once again, I would like to convey you one message of our CM, Captain Amrinder Singh, that due to this pandemic situation of coronavirus, so we must take all precautionary measures, avoid social gathering, keep social distance as well, and sanitize your hands with the sanitizers, and of course, uh, stay home, uh, stay safe as well, clean your surrounding environments as well. Okay. Now, this was the message given by the government. Now, I will come to the third chapter. So previously, in the very first chapter, we made discussion on what is communication, what is its basic block diagram, what is modulation, okay, what are the advantages of modulation, what is baseband transmission, electromagnetic spectrum, and other terms associated with the communication. Then in second chapter, we have studied amplitude modulation systems, 5 types: double-side full carrier system, double-side suppressed carrier, single sideband suppressed carrier, vestigial sideband transmission, then independent sideband, along with their applications, their frequency spectrum, their time domain description, their mathematical description, all we discussed, right? So today I am going to start, even in the very first lecture of this session, I mean, while introduction of, communication, so I have given you some hint about frequency modulation. So again, I am because this chapter we will discuss in detail. So these are some contents, some syllabus contents which we will discuss. Okay, expression for frequency modulated wave, its frequency spectrum, then modulation index, so maximum frequency deviation. What is the bandwidth of FM signal? What is the Carson rule? Then what is the effect of noise on FM carrier? Noise triangle, it will be compared with AM as well. Then what is the need of the pre-emphasis and de-emphasis and capture effect? So we will make the comparison of both the modulations, I mean FM and AM. And besides that, we will also discuss in this particular chapter phase modulated wave, its modulation index, and we will make the comparison. So already told you that this frequency modulation and phase modulation both are the types of angle modulation. Okay. Uh, in the last chapter, we discussed various AM system where carrier was the amplitude of the carrier, the phase of the carrier, the amplitude of the carrier was modulated with the help of the, in accordance with the variation of the message signal or modulating signal. But this is another method. And this is another kind of modulation. This comes under angle modulation, uh, where method of modulating a sinusoidal carrier. So again, we need two signals: one carrier signal, which is having high power and high frequency, and another one is modulating signal or message signal, which contains information. Okay, so characteristics of the carrier will vary. So last discussions, in the last few discussions of lectures, I mean, we made on amplitude modulation system, where amplitude was varied in accordance with the modulated signal. Now here frequency of the carrier signal will vary, right? So this comes under angle modulation. Let us again go through quickly. Here in FM, frequency of the carrier will vary in accordance with the message signal or modulating signal. In case of phase modulation, phase angle of the carrier is varied in accordance with the message signal. Okay. Now we will discuss what is the theory of the frequency modulation. See, this is modulating signal which contains information. This is sinusoidal in nature. Okay. He said in sinusoidal frequency modulation FM, we need two signals. One is modulating signal which contains information. Look at its mathematical expression. This is pure sinusoidal. And another one, we need carrier. That is also sinusoidal, also sine wave, but at much higher frequency. So FM is a system of modulation in which instantaneous frequency of the carrier is varied in proportion with the amplitude of the modulated signal. So here, which parameter of the carrier will vary? Frequency, instantaneous frequency of the carrier. It will vary
as in accordance with what? In accordance with the amplitude of the modulated signal. So frequency will vary. Now amplitude of the carrier signal remains constant. This is biggest advantage. Here amplitude will remain constant. But what other parameter will vary? Only frequency of the carrier will vary. So if frequency varies, if it is showing changes in frequency, then it means information is conveyed via frequency changes. Clear? Okay, next. Now, how in time domain this FM, how it is looking like? Look at this. I have already shown you. See, this FM was first practically tried in 1936 as an alternative to AM. So AM ਦੀ ਬਜਾਏ ਕਿਉਂਕਿ AM ਵਿੱਚ ਡਿਸਐਡਵਾਂਟੇਜ ਬਹੁਤ ਸੀ, ਪਾਵਰ ਬਹੁਤ ਕੰਜ਼ਿਊਮ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਭਾਵੇਂ FM ਨਾਲੋਂ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਘੱਟ ਸੀ ਪਰ ਪਾਵਰ ਵਾਸ ਦੀ ਮੇਜਰ ਫੈਕਟਰ ਐਂਡ ਮੋਰ ਓਵਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨੋਇਜ਼ ਸੀਗੀ। ਸੋ ਨੋਇਜ਼ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਪਾਵਰ ਤਾਂ ਘਟੇ ਜਾਂ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਵਧਾ ਕੇ 1936 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲੀ ਇਹਨੂੰ ਟਰਾਈ ਕੀਤਾ। तो जी आप इस चैप्टर के बाद डिस्कस करा होर भी ज़्यादा। सो एंड FM ट्रांसमिशन इज मोर रेजिस्टेंस टू नॉइज दैन AM। लुक एट दिस इज द मेजर फैक्टर, मेजर एडवांटेज ऑफ FM। दिस इज मोर इम्यून टू नॉइज और मोर रेजिस्टेंट टू नॉइज। दिस इज क्वाइट बेटर दैन AM। नाउ दिस इज द टाइम डोमेन डिस्प्ले ऑफ FM wave। लुक एट द फर्स्ट वन इज मॉड्यूलेटेड सिग्नल हैविंग एम्पलीट्यूड इज EM, and this is the frequency modulated signal FM. For your simplicity, carrier is not shown, he has not shown, but it is understood that carrier is there. Okay, is there while okay. So this is what look at here. Amplitude is increasing, amplitude of the modulated signal is increasing, and frequency of the signal is also increasing. Here in carrier, here it is decreasing. Whenever amplitude of the modulated signal is decreasing, rather showing negative, the frequency of the carrier will decrease. This is the minimum frequency and this is the maximum. So where it is showing maximum frequency, where amplitude is more. Where it is showing minimum frequency, where amplitude is negative maximum, I mean very less. So variation in frequency, even at a very low frequency, a very low voltage, very high voltage, variation in frequency. There is a variation or changes in the frequency. No noise. Frequency changes in what? Frequency changes of the carrier, right? And look at the amplitude. Amplitude is remaining constant. So only frequency characteristics of this signal is varied. So this way it becomes a frequency modulated signal. So as there is changes in the frequency, with the help of this modulated signal, it means information is conveyed. Look at here signal, modulated signal is absent, no signal. And look at, is there any change in frequency? No change. So carrier will not change. It will change only if amplitude of the modulated signal will be present over there. But since it is absent there, so there is no change in frequency, right? This was the time domain display of FM wave. Okay. Now what we observed from this particular time domain display, he said the amount by which the carrier frequency varies from its unmodulated values. Look at, say I am taking an example, say I am taking an example of 100 kilohertz carrier. Now how much it will vary in accordance with the amplitude of the modulated signal? It may vary one or it may show 101 kilohertz, or it may show 99 kilohertz, say variation of 1 kilohertz, or even may more. Okay, there is a variation. Either frequency will increase or decrease. Whenever it is increasing or decreasing, it means it is changing. Clear na? Yes, Vacho, are you getting me? Yes, sir. Yes, sir. So with the application of the modulating signal, whenever the modulating signal is increasing or its amplitude is increasing or decreasing, accordingly frequency of the carrier signal is increasing or decreasing. Okay, there is a change. It means it is deviating from its unmodulated value. Frequency of the carrier signal is changing, but how much change is there? Whatever change may be in increase, change may be in decrease. So that is called the amount which the carrier frequency varies from its unmodulated value. That is called deviation. Okay.
and this deviation is made proportional to the instantaneous value of the modulating signal or the amplitude ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ so ਜਿਹੜੀ ਹਾਂ the rate at which the frequency variation or oscillation takes place ਕਿਸ ਰੇਟ ਨਾਲ ਕਿਸ ਦਰ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਆ ਉਹਦੀ ਵੇਰੀਏਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਆ ਜਾਂ oscillation ਦੀ ਟੇਕ ਪਲੇਸ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਕਿਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ ਉਹ ਰੇਟ ਕਿਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਮੋਡੂਲੇਟਿੰਗ ਸਿਗਨਲ ਦੀ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਆ ਉਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਪਰ ਇੱਥੇ FM ਜਿਹੜੀ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਮੋਡੂਲੇਟ ਬਣਦਾ ਮੋਡੂਲੇਟਡ ਹੋ ਕੇ ਉਹਦਾ ਐਂਪਲੀਟਿਊਡ ਕੀ ਰਹਿੰਦਾ ਦੈਟ ਰਿਮੇਨਸ ਕਨਸਟੈਂਟ ਸੋ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦ ਬਿਗੇਸਟ ਐਡਵਾਂਟੇਜ ਕਲੀਅਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨੋਇਜ਼ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਆ चलो फेस मॉड्यूलेशन बाद डिस्कस करेंगे पर फिलहाल मैं दिखा देना फेस मॉड्यूलेशन लुक एट इट्स डायग्राम लुक एट इट्स डायग्राम here this diagram is more or less similar to that FM but there is a slight change in modulating signal look at it is a 90-degree shifted and it is a time derivative of the signal so we are in fact look at here amplitude of the this is a phase modulation here amplitude of the modulated signal is increased but look at here carrier is stretched means phase is lagging means it is showing less frequency and now from higher to lower zero to negative maximum this is changing so here carrier is compressing and phase is leading you know carrier is showing compression here carrier is showing stretching so phase is lagging here phase is leading so lagging and leading it is leading towards to phase variation and from phase variation what we are getting in fact we are getting change in frequency so it means phase modulation can produce frequency modulation clear na Yes, sir. phase जी, sir. modulation so phase Yes, and sir, frequency yes. of the carrier Can you please help me? in proportion with the modulated signal हाँ बच्चे बोलो कौन who is what kind of help you want tell me who is talking yes okay now so how we can differentiate FM and PM see we can both are looking like that frequency is being varied but in FM in PM look at so both can be differentiated with the original signal modulated signal it is a 90 degree shifted over here and time derivative of the modulated signal so with the time derivative of the modulating signal and 90-degree shifting value there is a change in phase which corresponds to the change in the frequency but in case of FM there is no 90-degree phase shifting of the modulated signal or no time derivative of the modulated signal so directly frequency of the carrier signal is being varied with the instantaneous value of the amplitude of the modulated signal in case of F look at here in case here is look at so he said this is looking like same as FM wave but this is time derivative of modulated signal okay with respect to time so we plotted this curve in fact this time domain graph of PM I mean phase modulation so plotted the time derivative of modulated signal which is the original xt but shifted by 90 degree so from this discussion it is clear that difference between F and PM waves can be made only by comparing the original modulating wave clear na in FM it was not 90 degree shifted but in PM it was 90 degree shifted and becomes a time derivative clear with this value the frequency of phase of the carrier is changing and because of the change in phase somewhere it is lagging somewhere it is leading frequency is showing somewhere stretching somewhere it is compressing so it is being varied clear so from phase modulation you can get FM as well let us quickly go through some important definitions of FM see for the single tone FM I mean for one frequency only modulating signal xt it is sinusoidal in nature its peak amplitude is EM mathematical frequency is FM mathematically can be expressed as this and unmodulated carrier here in this case this is A sin omega
CT plus phi. Okay, this is modulating signal. This is the instantaneous value of the carrier. This is the instantaneous value of the modulating signal. This is the instantaneous value of the carrier signal. Now third one is, this is the information signal, this is the carrier signal, and characteristics of this signal, which characteristic will vary frequency. Now then when it will change, it will be modulated. So then at that time it will become FM, frequency modulated signal. Now what is the instantaneous frequency of the FM wave? Look at in this expression. Now this is the instantaneous frequency of the FM wave. See, this is equal to Fc plus Kf xt. It means, what is Fc? This is the frequency of the carrier. Now this is changed by this factor Kf xt. What is Kf xt? Kf is a constant and xt is this one, occasion 3.31. Xt is a modulated signal. You can put down over here. Put down over here. Put the value of xt in this particular location. Right now, so right now this will become, look at page number 10 ਪਿੱਛੇ page number ਕਿੰਨਾ ਸੀ, so ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ page number ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਸੀ 5, so 3 ਪੇਜ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ 4 ਤੇ ਜਾਈਏ, ਲੱਭਣਾ ਪਊਗਾ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ 4 ਨਹੀਂ, ਉਹ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਥੋੜਾ ਮਿਸਿੰਗ ਹੈਗਾ ਵਿੱਚ, ਉੱਪਰ ਨੀਚੇ ਹੋ ਗਿਆ, ਹਾਂ ਯੈਸ ਦਿਸ ਇਜ਼, हाँ दिस इज ਹੁਣ ਇਸ ਵਿੱਚ ਆ ਦੇਖੋ, ਪਹਿਲਾ FCC ਪਲੱਸ KF ਨਾਲ ਕੀ ਸੀ XT ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਸੀ, ਮੋਡੂਲੇਟਿਡ ਸਿਗਨਲ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਪੁੱਟ ਕਰਤੀ, ਆ ਦੇਖੋ, ਸੋ ਇਹ ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ ਸਾਡਾ KF EM ਨਾਲ cos 2π FMT ਬਣ ਗਿਆ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ KF ਤੇ EM ਦਾ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਨਾਮ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਡੈਲਟਾ, ਆ ਦੇਖੋ KF ਤੇ EM ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਹੈ that is delta, and this is the frequency deviation, clear? ਇਹ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ, ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਦੇਖ ਲਓ ਵੀ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਡੈਵੀਏਸ਼ਨ ਕਿਹਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਪ੍ਰੋਪੋਰਸ਼ਨਲ ਹੈ, ਐਂਪਲੀਟਿਊਡ ਆਫ ਦਾ ਮੋਡੂਲੇਟਿੰਗ ਸਿਗਨਲ ਦੇ, ਔਰ ਉਹ KF ਕੀ ਹੈ ਕਾਂਸਟੈਂਟ, ਇਥੋਂ ਕਦਾ ਕੱਢੀਏ, ਯੂ ਬ੍ਰਿੰਗ ਡਾਊਨ KEM ਓਵਰ ਡੈਲਟਾ, ਸੋ ਡੈਲਟਾ ਕੀ ਆ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਡੈਵੀਏਸ਼ਨ, ਜਿਹਦੇ ਯੂਨਿਟ ਕੀ ਆ ਹਰਟਸ, ਔਰ EM ਕੀ ਆ ਪੀਕ ਐਂਪਲੀਟਿਊਡ ਆਫ ਦੀ ਮੋਡੂਲੇਟਿੰਗ ਸਿਗਨਲ, ਜਿਹਦੇ ਯੂਨਿਟ ਕੀ ਆ ਵੋਲਟਸ, ਸੋ KF ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ, ਉਹਦਾ ਯੂਨਿਟ ਕੀ ਆ ਹਰਟਸ ਪਰ ਵੋਲਟਸ, ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ? ਯੈਸ ਬੱਚੋ, हेलो स्टूडेंट्स? यस सर। हाँ अर्जुन, यस सर। यस सर। फ्रीक्वेंसी डेविएशन की है, मैं पहले ही गल दसदी भी किन्ना जिहड़ा अनमोडुलेटेड कैरियर है जदों उस चेंजेस आउंदियां ते किन्ना का अपनी ओरिजिनल वैल्यू तो डेविएट हुंदा, यानी किन्नी को उहदी वैल्यू वधदी किन्नी को घटदी, चेंज किन्नी को हुंदी है, असीं उहनूं फ्रीक्वेंसी डेविएशन, यानी किन्ना को डिपार्ट हुंदा, जुदा हुंदा ओह, ठीक है। ते इहनूं असीं मैथमेटिकली इधर डेल्टा इज इक्वल टू KF/EM, ਇਹਨੂੰ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਡੈਵੀਏਸ਼ਨ ਹੈ ਵਿਚ ਇਜ਼ ਪ੍ਰੋਪੋਰਸ਼ਨਲ ਟੂ ਦੀ ਐਂਪਲੀਟਿਊਡ ਆਫ ਦਾ ਮੋਡੂਲੇਟਿਡ ਸਿਗਨਲ। ਔਰ ਨੋਟ ਕਰੋ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਮੋਡੂਲੇਟਿਡ ਸਿਗਨਲ ਦੀ ਕੋਈ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ? ਨੋ, ਸਿਰਫ ਉਹਦਾ ਐਂਪਲੀਟਿਊਡ ਆਉਂਦਾ। ਸੋ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਫਰੋਮ ਮੋਡੂਲੇਟਿਡ ਸਿਗਨਲ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ, ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਔਰ ਮੈਕਸਿਮਮ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਆਫ FM ਕਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਕੱਢੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ 'ਚ ਚੇਂਜ ਵੀ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਚੇਂਜ ਵਾਧੇ 'ਚ ਵੀ ਆ, ਘਾਟੇ 'ਚ ਵੀ ਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਲੱਸ ਤੇ ਮਾਈਨਸ ਦਾ ਸਾਈਨ, ਜਿਹੜਾ ਪਲੱਸ ਸਾਈਨ ਹੈ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਫॉर ਐਡੀਸ਼ਨ, ਤੇ ਮੈਂ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨੈਗੇਟਿਵ ਸਾਈਨ ਹੈ ਉਹ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਵਧਣਾ ਜਾਂ ਘਟਣਾ ਮੀਨਸ ਚੇਂਜ, ਚੇਂਜ ਇਨ ਵਟ, ਚੇਂਜ ਇਨ ਕੈਰੀਅਰ, ਸਮਝ ਆ ਗਈ? ਕਿਉਂ ਚੇਂਜ ਆਈ? ਕਿਉਂਕਿ ਐਂਪਲੀਟਿਊਡ ਆਫ ਮੋਡੂਲੇਟਿਡ ਸਿਗਨਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵੱਧ ਤੇ ਘਟ, ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਚੇਂਜ ਆਈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਇਹਦਾ ਮੈਥਮੈਟੀਕਲ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਮੈਂ ਜੇ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਖਤਮ ਹੋਣ ਨੂੰ ਫਿਰ ਟਾਈਮ ਲੈਣਾ ਇਹਨੇ, ਠੀਕ ਨਹੀਂ? ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਫਿਰ ਵੀ ਚਲੋ ਅੱਧਾ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਦੁਬਾਰਾ ਕੱਲ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਗੋ ਥਰੂ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆਪਾਂ ਮੈਥਮੈਟੀਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਦੇਖੋ ਨੋਟ ਕਰੋ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਹਜੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 12-1 ਵਜੇ, ਅਜੇ 15 ਮਿੰਟ ਪਏ ਆ ਸਾਡੇ, ਅਜੇ ਪਏ ਆ 15 ਮਿੰਟ, ਕਿਉਂਕਿ 8-10 ਮਿੰਟ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਵਾਰਨਿੰਗ ਸਿਗਨਲ ਦੇ ਦਿੰਦਾ। ਓਕੇ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹਦਾ ਮੈਥਮੈਟੀਕਲ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਦੇਖਾਂਗੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਜਿੱਦਾਂ AM ਦਾ ਦੇਖਿਆ ਸੀ, ਕੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀ FM ਹੈ, ਵੀ ਨੋ ਦੈਟ FM ਵੇਵ ਇਜ਼ ਅ ਸਾਈਨ ਵੇਵ ਹੈਵਿੰਗ ਏ ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਐਂਪਲੀਟਿਊਡ। ਆਪਾਂ ਦੇਖੋ ਨਾ, ਆਪਾਂ पेज नंबर 3 ਤੇ ਚੱਲ ਜਾਣੇ। ਲਓ ਆ ਦੇਖੋ ਇਦਾਂ ਦੀ ਆ ਨਾ, ਇਹ PM ਆ, 2 ਤੇ ਚੱਲ ਜਾਣੇ। ਲਓ ਆ ਦੇਖੋ ਇਦਾਂ ਦੀ, ਆ ਦੇਖਣ 'ਚ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਸਾਈਨ ਵੇਵ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਹੈਲੋ, ਹਾਂ, ਇਹ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਮੋਡੂਲੇਟਡ ਵੇਵ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਘਟ ਰਹੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ।
ਜਿੱਥੇ हाँ जी ਐਂਪਲੀਟਿਊਡ सर। ਵਧ ਰਿਹਾ ਇੱਥੇ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਵਧ ਰਹੀ, ਜਿੱਥੇ ਐਂਪਲੀਟਿਊਡ ਘਟ ਰਿਹਾ ਉੱਥੇ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਘਟ ਰਹੀ। तो चेंज का चाहिए कैरियर च, कैरियर की केड़ी करैक्टरिस्टिक्स फ्रीकुएंसी दे विच, ठीक है। सो चेंज आई आ, उस चेंज ਨੂੰ ਹੀ ਇੱਕ ਆਪਣੀ ओरिजिनल वैल्यू ਤੋਂ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਚੇਂਜ ਹੋਈ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਡੈਵੀਏਸ਼ਨ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਔਰ ਉਹ ਡੈਵੀਏਸ਼ਨ ਡੈਲਟਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਤੇ ਡੈਲਟਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ kf into em ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਆ। 9 पेज ਤੇ ਆ ਜਾਓ, ਇਹ ਆ ਦੇਖੋ ਡੈਲਟਾ ਜਿਹੜਾ kf into em, ਇਹਨੂੰ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਡੈਵੀਏਸ਼ਨ ਕਹਿੰਦੇ। ਤੇ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਡੈਵੀਏਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਆ, ठीक है, ये प्रोपोर्शनल हैगी एम्पलीट्यूड ऑफ मॉड्यूलेटिंग सिग्नल दे, ते इंडिपेंडेंट के तो एफएम तो पता लग गया। यस फिर मिसिंग हो गई, कोई नहीं, आ थोड़ा डाटा मिस हो गया, मैं इनू दोबारा क्विकली रिकवर करना कोशिश करता। कई बारी नैट दे विच चलदे चलदे प्रॉब्लम आ जाती है। 9 नंबर पेज पे आ रहा मैं अजे, हाँ हुण आ गया, शायद आ गया, यस यस, अजे भी मिसिंग है, देखो मिस हो गया ना डाटा। दिस इज इंटरनेट प्रॉब्लम। मैं कोशिश कर रहा कि हौली हौली करके आवा ताकि डाटा रिकवर हो जाए। मैथमेटिकल आ देखो अजय भी 9 यस आ रहे हैं, बैक साइड आए। ओके जी, मैथमेटिकल एक्सप्रैशन तो आने थोड़ी जी टर्म मिसिंग ना, हाँ यस आ गई। हुण देखो बेटे, कहता असीं सानूं जाणदे हां कि एफ एम जिहड़ी वेव साइन वेव है, जिहदा एम्पलीट्यूड कॉन्सटेंट है एंड ओके एंड इट इज़ वेरिंग विद द इंस्टेंटेनियस। जिहड़ा एफ एम दा जिहड़ा फ्रीकुएंसी है वो वेरी करती है, तो वो इंस्टेंटेनियस फ्रीकुएंसी में चेंजेस कितनी आई, तो एज द इंस्टेंटेनियस फ्रीकुएंसी चेंजिंग कंटीन्यूअसली। यस, फ्रीकुएंसी का जे आप पेज नंबर 2 ते देखी डायग्राम, किते वध रही किते घट रही है, कंटीन्यूअसली चेंज आ रही है। सो बट एंगुलर वेलोसिटी ऑफ दी ओमेगा वो जिहड़ी आ एफ एम वेव का फंक्शन है, किद्दां बनदा, एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा ऑफ एन एफ एम वेव इज द फंक्शन ऑफ एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द कैरियर एंड एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द मॉड्यूलेटिंग सिग्नल। जे कल्ली एफ लईए तो वो फ्रीकुएंसी है, जे ओमेगा लईए वो एंगुलर वेलोसिटी आ, यानी ओमेगा जे सी लवां 2 पाई एफ सी, ओमेगा एम लवां तो 2 पाई एफ एम, पता लग गया। जे कला ओमेगा लवां तो 2 पाई एफ। सो जिहड़ी कहंदा एंगुलर वेलोसिटी आ वो इन्हां दोनों का फंक्शन है। फिर आप एफ एम नूं किद्दां मैथमेटिकली लिखदे, इदां लिखदे ई दे पैरां च एफ एम, ये इंस्टेंटेनियस वैल्यू आ, एस टी नाल उहनूं रिप्रजेंट करता। आ लो ई सी साइन ऑफ दिस, मतलब फंक्शन ऑफ दिस, और एफ ऑफ दिस मीनस ओमेगा सी कॉमा ओमेगा एम। उत्ते क्या ना कि जिहड़ी एफ एम की इंस्टेंटेनियस फ्रीकुएंसी है वो कंटिन्यू चेंज कर रही है, जिहड़ी उहदी एंगुलर वेलोसिटी आ वो एफ एम वेव की वो इन्हां दोनों का फंक्शन है। असीं मैथमेटिकली उहनूं इदां लिख लिया, पता लग गया। हुण इत्थे ई सी भी उदा रह गया, साइन भी उदा रह गया, इसदा मतलब थीटा टी की बन गया, दिस वन थीटा टी इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ ओमेगा सी कॉमा ओमेगा एम, ठीक है। आ चीज़ बनी है। Yes, जिद्दां sir. वैसे तुसीं असीं लीनियर वेलोसिटी की गल करते हैं, लीनियर वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्टेंस बटे टाइम या डिस्प्लेसमेंट बटे टाइम, पर जो वो एंगुलर वर्ड ला दिता जाए, एंगुलर वेलोसिटी की बन गई, उधर उपरों एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बन जाना, थले टाइम बन जाना। जिहड़ी लीनियर जिहड़ा एक्चुअली डिस्टेंस है डिस्प्लेसमेंट जां डिस्टेंस वो तो असीं मीटर सेंटीमीटर या किलोमीटर च मेजर करते हैं, पर जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है वो कच मेजर करते हैं, वर्ड की नाल लग गया डिस्प्लेसमेंट के एंगुलर, इसका मतलब एंगल है, किन्ने एंगल से कोई चीज़ डिस्प्लेस हुई, वो साडा हो गया थीटा, पता लग गया। सो एंगुलर वेलोसिटी क्योंकि थीटा बटे टी और तो असीं थीटा कढ़ सकते हैं, तो एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा इज इक्वल टू थीटा बटे टी, थीटा इज इक्वल टू ओमेगा टी, तो वो देख ला थीटा इज इक्वल टू ओमेगा टी। सो उन्हें तभी क्या है, इट इज़ अ फंक्शन ऑफ ओमेगा सी एंड ओमेगा, पता लग गया। थोड़ा जहा इनू हूँ क्योंकि 2-4 मिनट रह जाने, 8 अजे पे 8 मिनट, कोई 8 मिनट पे। आ देखो हुण उन्हें एग्जाम्पल ली है, कहता इस फिगर च शो किया भी जिदा आ एक ए जिहड़ा वैक्टर आ, जे मैं इनू रोटेट करा इदां तो किसी एंगल से रोटेट करेगा, और यदी वेलोसिटी कितनी है ओमेगा, ओमेगा इस केस का एंगुलर इनू कॉन्सटेंट शो कर रहा, पर क्योंकि इंस्टेंटेनियस फ्रीकुएंसी तो कंटीन्यूअसली चेंज आ रही है, इसका मतलब फिर ये जी फ्रीकुएंसी आ जी एंगुलर वेलोसिटी उस भी चेंज आऊगा, पता लग गया। आ कहता नहीं Yes, sir. जी कहता ए आ एक वैक्टर है और कॉन्स्टेंट वेलोसिटी से रोटेट कर रहा,
ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਦਾਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਥੀਟਾ ਟੀ ਨੂੰ ਓਮੇਗਾ ਟੀ ਦੇ ਬਰਾਬਰ। ਪਰ ਕਹਿੰਦਾ ਐਫਐਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਆ ਉਹ ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਨਹੀਂ ਆ, ਉਹ ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਨਹੀਂ ਆ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਕੰਟੀਨਿਊਸਲੀ ਚੇਂਜ ਹੋ ਰਹੀ ਆ। ਆਹ ਦੇਖੋ, तो फिर ਜਿਹੜੀ ਐਂਗੂਲਰ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਐਫਐਮ ਦੀ ਬਣੀ, ਐਫਐਮ ਵੇਵ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਐਂਗੂਲਰ ਵੈਲੋਸਿਟੀ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਆ ਜਿਹੜਾ ਓਮੇਗਾ ਆ ਇਹ ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਨਾ ਰਹਿ ਕੇ, ਆ ਦੇਖੋ ਓਮੇਗਾ ਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਸ ਫੈਕਟਰ ਨਾਲ ਚੇਂਜ ਹੋਇਆ। ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ? ਇਹ ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਇਕੱਲਾ ਹੁੰਦਾ ਓਮੇਗਾ ਤੇ ਥੀਟਾ ਬਟੇ ਟੀ ਬਣ ਜਾਣਾ, ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਚੇਂਜ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਐਂਗੂਲਰ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਵੀ ਐਫਐਮ ਦੀ ਚੇਂਜ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਸੋ ਕੈਰੀਅਰ ਕਾਹਦੇ ਨਾਲ? ਦੇਖੋ 2 ਪਾਈ FC ਜਾਂ ਇੱਕ ਐਂਗੂਲਰ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਆਫ ਦੀ ਕੈਰੀਅਰ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਚੇਂਜ ਹੋ ਰਹੀ? NA ਫੈਕਟਰ ਨਾਲ। KF EM cos omega MT, ਇਹ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਉੱਪਰ ਪੜਿਆ ਸੀ, ਠੀਕ ਨਹੀਂ? ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਥੀਟਾ ਟੀ ਆ ਉਹ ਦੇਖੋ ਉਹ ਬਣ ਗਿਆ ਓਮੇਗਾ ਟੀ। ਆ ਦੇਖੋ ਫਿਰ ਜੇ ਅਜੇ ਦੇਖੋ ਟਾਈਮ t = 0 ਤੇ ਐਂਗਲ 0, ਜੇ ਮੈਂ ਵੈਕਟਰ ਨੂੰ ਰੋਟੇਟ ਕਰਾਂ ਤੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਐਂਗਲ ਬਣ ਜੂ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਹੈਲੋ, ਬਣੇਗਾ ਨਾ? हाँ, जिदा थोड़ी बांह इदा पई आ, फिर जे माड़ी जी ऊपर लैके जाओगे एंगल बन जाना। पर जे आपां टाइम टी ते इत्थे कोई छोटा एंगल आ, इस तो थोड़ा वड्डा एंगल आ, इत्थे सारा वड्डा एंगल आ, फिर टाइम टी तक जिहड़ा एंगूलर वैल्यू आ वो किन्नी बने, वो फिर सारी इकट्ठी करनी पैनी। इकट्ठी करने वास्ते सानूं इंटैगरेट करना पैना। आ मैथ है, सैकंड सैम तुसीं पढ़िया। तो इस करके थीटा दा ओमेगा टी बन गया, क्योंकि जो मैं इंटैगरेट करना है विद रिस्पैक्ट टू टाइम, ठीक है। फिर इनू ओमेगा नू dt नाल मल्टीप्लाई कर दो। पता लग गया? आ टाइम टाइम आ इंटैगरेशन का साइन, पता लग गया? जिहड़ा इंटैगरेशन का साइन है, क्योंकि मैनू इस 0 वैल्यू तो लैके t टाइम तक जिन्ना एंगल बनया सारे एंगल्स नू इकट्ठा करने वास्ते मैनू इंटैगरेट करना पैना। और थीटा टी उपर ओमेगा टी सी, जो मैं इंटैगरेट करना तो ओमेगा नू dt नाल मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। क्योंकि टाइम विद रिस्पैक्ट टू टाइम है, इंटैगरेटेड ओमेगा विद रिस्पैक्ट टू टाइम। सो इदा करते हैं जो असीं डिफरेंशिएट करते हैं बटे dt लैने, असीं बटे dt लैने, जो असीं इंटैगरेट करना इनटू dt लैने। क्लीयर हो गई गल? हेलो बच्चों, क्लीयर हो गई? यस सर। हाँ यस सर। आ जिहड़ा ओमेगा आ ओदी वैल्यू आ है ऊपर 3.37 च, इहनूं इत्थे पुट कर दिओ। आ लै इत्थे ओमेगा दी वैल्यू पुट करता, dt इधर बाहर पे dt नाल इहनूं गुणा कर दिओ। पता लग गया? हुण dt ओमेगा c नाल भी गुणा होगी, अजे कोई भी नहीं। आ देखो इंटैगरेट किया स्केयर ब्रैकेट के विचों, फिर ओमेगा सी कॉमन कढ़ लो। और देखो ने ओमेगा सी कॉमन कढ़ लिया, इत्थे 1 रह गया, इस एक्सप्रैशन के थले ओमेगा सी रह गया, बाकी सेम है। अजे dt बाहर ही पई है, अजे आपां इंटैगरेट नहीं किया, देख क्योंकि साइन शो कर रहा। जदों ये साइन शो करना हट जाऊगा इट मीनस वो इंटैगरेट हो गया। तो फिर की किया इत्थे हुण वो साइन नहीं है, आ देखो आ नहीं है, तो ओमेगा सी उन्हें बाहर ही रखा, तो इत्थे की रह गया सी 1 dt नाल गुणा हो गया, 1 dt नाल गुणा होकर की बन गया dt। dt की है टाइम ना डिफरेंशिएट हो गई, पर जो उन्होंने इंटैगरेट करना फिर ओरिजिनल वैल्यू आ जानी, तदे टी आ गई, देख लो टी आ गई ना कली। और इधर KF ते EM का जो प्रोडक्ट है वो कॉन्स्टेंट है, पर cos ओमेगा m के नाल की लगा टी, तो टाइम के नाल आ गया जो टाइम वाला फंक्शन है उन्हें इंटैगरेट होना। सो जो cos ओमेगा m टी इनटू dt होना, जो इन्हें इंटैगरेट होना, तो इतों साइन ओमेगा m टी बन जाना, तो जोड़ा यदा ओमेगा m है वो थले भी आ जाना। पता लग गया? इतों आप ओमेगा सी बाहर कर ले, मानेगा ये नीचे आ गया। सो आ अगला एक्सप्रैशन बन गया। क्लीयर? पता लग गया? 3.5 मिनट रह, ठीक है। हुण इहदे विचों की कीता, ओमेगा सी ना अंदर जाके गुणा कर लिया, टी ना भी कर लिया, एन भी कर लिया, इतों ओमेगा सी कट जाना, कट गया ऊपर कट गया। तो अगे केस की है, मैनू इन्ना पता कि डेल्टा जो फ्रीकुएंसी डेविएशन KF * EM होंदा, इत्थे पुट कर दे। आ लो इत्थे डेल्टा पुट करता तो जी थले इत्थे ओमेगा सी कट गई, जी ओमेगा m सी वो 2 पाई FM के बराबर है, तो 2 पाई जो कॉन्स्टेंट है उन्होंने आप इग्नोर भी कर सकते हैं। इस करके आ थीटा टी की वैल्यू आ निकली 3.310, ये थीटा टी की वैल्यू कट रहे हैं। इनू उस एक्सप्रैशन से जिते फ्रीकुएंसी मॉड्यूलेटेड सिग्नल लिखा सी उत्थे पुट कर दो, उत्थे लिखा से ना EC sin थीटा, आ थीटा की वैल्यू असीं पुट कर दी। क्लीयर? हुण EC sin नाल इहनूं भी गुणा कर, EC sin नाल अगले नूं भी गुणा कर। हुण इहदे विच जिहड़ा डेल्टा बटे FM आ वो मॉड्यूलेशन इंडैक्स बनिया। आ देखो उहदी वैल्यू m के पैरां च F रखता, मतलब फ्रीकुएंसी मॉड्यूलेशन इंडैक्स फॉर FM। सो आ मैथमेटिकल एक्सप्रैशन बन गया। ये मैथमेटिकल एक्सप्रैशन काहदा बनया? FM का। पता लग गया? इथों मॉड्यूलेशन इंडैक्स कितना कढ़िया,
और देख डेल्टा बटे एफ आ देख डेल्टा बटे एफ ये मॉड्यूलेशन इंडेक्स है ये डेल्टा की है फ्रीक्वेंसी डेविएशन ਤੇ ਜਿਹੜੀ FM ਹੈ ਇਹ ਕੀ ਆ ਇਹ ਮੋਡੂਲੇਟਿੰਗ ਸਿਗਨਲ ਦੀ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਆ ਸੋ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਰੇਸ਼ੋ ਕੀ ਬਣ ਗਈ ਮੋਡੂਲੇਸ਼ਨ ਇੰਡੈਕਸ ਸੋ FM ਦਾ ਵੀ ਆਪਣਾ ਮੋਡੂਲੇਸ਼ਨ ਇੰਡੈਕਸ ਹੈ AM ਦਾ ਵੀ ਆ ਤੇ PM ਦਾ ਵੀ ਹੋਏਗਾ ਗਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਇਹ ਮੋਡੂਲੇਸ਼ਨ ਇੰਡੈਕਸ ਜਿਹੜਾ ਕਾਫੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਪੁਆਇੰਟ ਇੱਥੇ ਹੈਗਾ ਇਹ ਮੋਡੂਲੇਸ਼ਨ ਇੰਡੈਕਸ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਹੀ ਬੈਂਡਵਿਡਥ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰਦੀ ਹੈ FM ਇਹ ਆਪਾਂ ਬਾਅਦ ਚ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੁਣ 1 ਮਿੰਟ ਤੇ 53 ਸੈਕਿੰਡ ਹੈਗਾ ਸੋ ਮੋਡੂਲੇਸ਼ਨ ਇੰਡੈਕਸ ਆਲਸੋ ਡਿਸਾਈਡ ਦੀ ਨੰਬਰ ਆਫ ਸਾਈਡ ਬੈਂਡ ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਮੋਡੂਲੇਟਿੰਗ ਸਿਗਨਲ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਅਪਰ ਬਣਦਾ ਸੀ ਇੱਕ ਲੋਅਰ ਬਣਦਾ ਸੀ ਜੇ ਦੋ ਮੋਡੂਲੇਟਿੰਗ ਬਣ ਲੈਂਦੇ ਸੀ ਦੋ ਅਪਰ ਬਣਦੇ ਸੀ ਦੋ ਲੋਅਰ ਬਣਦੇ ਸੀ ਪਰ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਮੋਡੂਲੇਸ਼ਨ ਇੰਡੈਕਸ ਆ ਉਹਨੇ ਸਾਈਡ ਬੈਂਡ ਕਿੰਨੇ ਬਣਾ ਦੇਣੇ ਆ ਔਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਵੀ ਸਾਰੇ ਸਾਈਡ ਬੈਂਡ ਲਈਏ ਜਾਂ ਕੋਈ ਇੱਕ ਵਿਰਲਾ ਵਾਂਝਾ ਲਈਏ ਜਿਹੜਾ ਸਾਈਡ ਬੈਂਡ ਦਾ ਐਂਪਲੀਟਿਊਡ ਸਿਗਨੀਫੀਕੈਂਟ ਨਹੀਂ ਆ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਇਗਨੋਰ ਕਰ ਦੇਣਾ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਿਗਨੀਫੀਕੈਂਟ ਉਹ ਅਸੀਂ ਲੈ ਲੈਣਾ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਇੱਥੇ ਮੋਡੂਲੇਸ਼ਨ ਇੰਡੈਕਸ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਸਿਰਫ AM ਚ 1 ਆ ਪਰ FM ਦੇ ਇਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਗ੍ਰੇਟਰ ਦੈਨ 1 ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ ਇਹ 1 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2500 ਤੱਕ ਵੇਰੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਹੀ ਬੈਂਡਵਿਡਥ ਡਿਸਾਈਡ ਹੋਣੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹਾਂਜੀ ਡੈਵੀਏਸ਼ਨ ਰੇਸ਼ੋ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਡੈਵੀਏਸ਼ਨ ਰੇਸ਼ੋ ਆ ਦੇਖੋ ਮੈਕਸਿਮਮ ਡੈਵੀਏਸ਼ਨ ਬਟੇ ਮੈਕਸਿਮਮ ਮੋਡੂਲੇਟਿੰਗ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਔਰ FM ਸਟੈਂਡਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਮੈਕਸਿਮਮ ਡੈਵੀਏਸ਼ਨ ਆ ਉਹ 75 ਕਿਲੋਹਰਟਜ਼ ਆ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਮੈਕਸਿਮਮ ਮੋਡੂਲੇਟਿੰਗ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਆ ਉਹ 15 ਕਿਲੋਹਰਟਜ਼ ਆ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰੇਸ਼ੋ ਆ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਡੈਵੀਏਸ਼ਨ ਰੇਸ਼ੋ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਸੋ 1 ਮਿੰਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਰਹਿ ਗਿਆ ਓਕੇ ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ ਕੋਈ ਕੁਐਸਚਨ ਤੁਹਾਡਾ ਪੁੱਛੋ ਕੋਈ ਕੁਐਸਚਨ ਮੈਥਮੈਟਿਕਲ ਨੋ ਸਰ ਓਕੇ ਓਕੇ ਗੁੱਡ ਲੱਕ ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ ਬੇਟੇ ਅਟੈਂਡੈਂਸ ਨੋਟ ਕਰ ਲਿਓ ਸਹਿਜਵੀਰ ਪੁਲਕਤ ਓਕੇ ਸਰ ਸਕਰੀਨਸ਼ਾਟ ਲੈ ਲਓ ਵੀਡੀਓ ਔਨ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਟਾਈਮ ਰਹਿ ਗਿਆ ਵੀਡੀਓ ਔਨ ਕਰਕੇ ਸਕਰੀਨਸ਼ਾਟ ਲੈ ਲਓ ਸਕਰੀਨਸ਼ਾਟ ਲੈ ਲਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ हाँ बेटे ले रहे हैं सर हाँ ले लिया हाँ मैं ओके ओके बस बहुत घट टाइम रह गया स्क्रीनशॉट ले करण अजय कुमार प्रिंस अपने वीडियो ऑन करो यार सारे अपनी मैं स्टॉप लगा शेयर करना वीडियो ऑन करता स्टॉप करती शेयर हाँ भाई चलो ऑन कर रहे हो अटेंडेंस भी हो जाएगी ना